Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So today we'll see the another points from your anatomy physiology, and that is nothing but the remaining parts from blood. Yeah, Dhanashree Kendre, okay, Smita, yes. So in the yesterday's session, I hope I am audible to you. In the last session, what we have seen, in the previous session we have seen these points. We have seen what do you mean by blood, plasma, component of blood, functions of blood. We have seen the different type of blood cells, RBCs, thrombocytes, and RBCs, platelets, WBCs we have seen. We have also seen the hemoglobin and its functions. The points related to RBCs we have completed. We have also seen the normal count and the hemocrit. What is that? We have seen. Yesterday only we have seen the how there is a life cycle of RBC, how they are prepared, how they are destroyed. Right? We have seen the blood groups also yesterday. We have seen these blood groups. So remember A, B, AB and O. These are the main classes of blood groups. Right? A, then B, then AB and O. They are the main classes of blood groups depending upon the antigen present on the RBC. अगर एंटीजन के ऊपर A एंटीजन एंड RBC के ऊपर A एंटीजन है तो उसको A blood group बोलने का. If a blood is having B antigen on RBC, known as a B group. So if both antigens are the AB and if none is there, known as O. So remember universal donor. Blood group O is known as universal donor and blood group AB is known as universal acceptor or universal recipient. Blood group AB universal recipient, blood group O universal donor. We have seen yesterday in the detail about this, right? So next part is nothing but the white blood cell. Next part is nothing but the white blood cell. कौन सा blood cell? White blood cell, है ना? So WBCs, they are also known as the leukocytes. Remember, white blood cells, WBC. WBC are also known as a leukocyte. WBCs are also known as a leukocyte. Leukocytes, okay? WBCs are also known as a leukocyte. What is the main role of WBC? तो WBC जो होता है, white blood cell जो होता है, leukocyte जो होता है, so they are having important function in your body. That is nothing but the immunity. So whatever immunity is there, that is because of the WBC. Suppose you got an infection and that infection will be neutralized, that infection will be destroyed by the WBCs. That's why WBCs are a defense system of your body. So WBC are also known as leukocytes. There are two type of WBC. दो टाइप का WBC होता है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है A granulocytes. So there are two major type of WBCs. First one is known as the granulocyte. So and second one is known as A granulocytes. So in the granulocytes, so they are also known as the polymorphonuclear leukocytes. Granulocytes, they are also known as the polymorphonuclear leukocytes. So granulocytes को अपन polymorphonuclear leukocyte भी बोलते हैं, है ना? And in that you have neutrophil, eosinophil and basophils. देखो granulocyte में तीन आता है, neutrophil, basophil and eosinophil. In the granulocytes you have three type of cell, that is a neutrophil, basophil and eosinophil. Okay, so granulocytes means what? So they are the cells having granules in their structure. They will have granules in their cytoplasm. एंड साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स होने के कारण उनको क्या बोलते हैं? उनको अपन बोलते हैं उनको बोलते हैं अपन ग्रैनुलोसाइट्स. तो उनको और एक वर्ड है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट. पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट. सो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल, राइट? ए ग्रैनुलोसाइट्स मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ए ग्रैनुलोसाइट्स? ए ग्रैनुलोसाइट मतलब क्या? इसमें ग्रैनुल्स नहीं होंगे. किसमें?
There is no granules in the cytoplasm of these WBCs. So they are two types, monocytes and lymphocytes. Monocytes and lymphocytes. Sometimes they used to ask you question on this. What are the granulocytes? What is the non-granulocytes? है ना, मतलब क्वेश्चन सिंपली पूछेंगे फॉलोइंग WBC इज नॉट अ ग्रेनुलोसाइट. ऑप्शन में देंगे ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी बेसोफिल, ऑप्शन सी इओसिनोफिल, ऑप्शन डी में देंगे मोनोसाइट्स. सो जो फिल्स वाले फिल्स जिसमें फिल आता है, जिसमें फिल्स आता है PHARMACOLOGY, so neutrophil, basophil, eosinophil, all they are nothing but the granulocytes. तो फिल वाले क्या है, ग्रेनुलोसाइट है, एंड साइट वाले क्या है, साइट वाले क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट्स. ठीक है. देन रिमेंबर लार्जेस्ट ब्लड सेल, राइट. WBCs are known as they are the largest blood cell in terms of size. WBC क्या है, WBC they are the large blood cell. WBC are the large blood cell, है ना. उनका साइज ज्यादा होता है, RBC से भी ज्यादा होता है. RBC are small as compared to the WBC. WBC are largest blood cell, but they are limited in the blood. They are not abundant as that of the RBC. RBC क्या है, RBC are the most abundant cell in the blood. मतलब ब्लड में सबसे ज्यादा कौन से होते सेल, RBC होते हैं. वो स्मॉल है साइज में 7 माइक्रोन, बट WBC आर लार्जर इन साइज, बट देयर काउंट इज लेस. ओनली 1% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम यू विल हैव अ RBC. पूरे ब्लड का 1% क्या रहेगा आपका, RBC रहेगा. सो सॉरी, टोटल 1% क्या रहेगा, WBC. WBC are the largest cell, but their count is less, 1% of total body blood volume, right. They are having important function in the defense and immunity. इनका function क्या है, defense and immunity. Now there are two type of WBCs I have told you. First one is the granulocyte, and second one is the agranulocytes. Now they are differentiated. इनका class कैसे होता है, they are differentiated based upon the staining technique. They are differentiated based upon the staining technique. देखो staining करता है ना. Now in the staining you have to use different type of dyes, you have to use different type of colors. So what are the names of dye used in the staining of WBC? WBC के staining में कौन से dye यूज करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर उनको क्या है, क्लासीफाई किया जाता है. So WBCs are classified based upon the staining technique. Now for example, okay, so there are two type of dye. So first one is the acidic dye and second one is the basic dye. So you can see eosinophils. So what it will indicate ना, eosinophil आपको क्या indicate करता है, eosinophil will indicate one dye known as a eosin. So eosinophil will indicate one dye known as a eosin. Okay, so eosinophil mass means what? So eosinophils, they are the white blood cell which are stained by eosin dye. तो eosin dye की वजह से जो staining होता है उनको बोलते हैं eosinophil. So that's why eosinophil. Eosin is a acidic dye. Remember, eosin is a acidic dye. Eosin is a acidic dye and it will stain a particular type of WBC in the blood known as a eosinophil. Now as it is an acidic dye, so that's why sometimes eosinophils are also known as acidophils. Eosinophils are also known as acidophils. याद रखना है आपको, eosinophils are also known as acidophils. Right? Eosinophils are also called as acidophil. Why? Because they are stained by acidic dye known as eosin, right? Now what is the lifespan of your eosinophils? It is nothing but the 7 to 12 days. ना eosinophil मतलब क्या? They will be stained by eosin dye, and that's why it is known as a eosinophil. Now eosin is a acidic dye. Eosin dye क्या है? acidic in nature. That's why sometimes eosinophil are also known as acidophils. इनको ही acidophil बोलते हैं. Now second dye अब है ना, okay. Second dye is there, one more dye is there known as a methylene blue.
one more dye is there known as a methylene blue. So alkaline solution of methylene blue, कौन सा? Alkaline solution of methylene blue. So alkaline solution of methylene blue will stain a particular type of cell in the WBC, है ना. तो यूओसिन जिसको स्टेन करता है उनको अपन यूओसिनोफिल बोलते हैं. तो मिथिलीन ब्लू दैट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ मिथिलीन ब्लू. अल्कलाइन मतलब क्या? बेसिक. अल्कलाइन मतलब क्या? बेसिक, राइट. तो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ मिथिलीन ब्लू व्हिच इज बेसिक एंड इट विल स्टेन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ WBC नोन एज अ बेसोफिल्स. तो मिथिलीन ब्लू जिसको स्टेन करेगा उनको बेसोफिल बोलते हैं. क्यों? बिकॉज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ मिथिलीन ब्लू इज अ बेसिक इन नेचर that will stain a particular type of cell known as a basophils. So what is the lifespan of basophil? So around 12 to 15 days. इनका 12 to 15 days lifespan होता है, right? Now hence they are known as a basophils because they are stained by basic dye. That's why baso. Now these are the cells which are having heparin and histamine. तो जो basophil है उसमें basophil जो होता है उसमें heparin होता है and histamine होता है. In the granules of basophil, you have heparin as well as histamine. Now, histamine, you know that it will promote the inflammation. Yeah, it will promote the inflammation. Heparin क्या करता है? Inflammation करता है. Inflammation. You know that heparin क्या है? It is a natural anticoagulant in the blood. Natural anticoagulant in the blood. Heparin क्या है? Natural anticoagulant. And then histamine is a chemical which promote the inflammation. So basically in the basophils, in the granules of basophil, you have heparin and histamine. ठीक है, ये दो केमिकल्स होते हैं. रोल क्या है अपन बाद में देखेंगे, राइट. नाउ लेट्स कम टू द अनदर टाइप ऑफ सेल नोन एज द न्यूट्रोफिल्स. है ना. न्यूट्रोफिल्स मीन्स व्हाट? न्यूट्रोफिल्स मीन्स दे आर न्यूट्रल. दे आर न्यूट्रल. न्यूट्रल फॉर व्हाट? दे आर न्यूट्रल फॉर बोथ dye. They are neutral for both dye. So that's why they are stained by both dye, eosin and methylene blue, right. They are neutral. They are neutral to both dye. That's why neutrophils. Okay, they are stained by methylene blue as well as eosin, and that's why they are known as neutrophil. Okay, and they will stain as a purple color. Okay, now what is the lifespan of neutrophils? Neutrophil का lifespan होता है 2 to 5 days. Remember, neutrophil, basophil, eosinophil. Why they are called as a neutrophil, basophil, eosinophil? Based upon the staining technique. उनका क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड है? Based upon the staining technique. So eosin is an acidic dye which will stain a particular type cell known as eosinophil, also known as acidophils. Methylene blue, alkaline solution of methylene blue will stain a particular type of cell known as a basophils, or it is also known as basophils, right? So it has a heparin and histamine. Heparin and histamine containing cell होता है. Heparin and histamine. Basically, they promote the inflammation during the infection. Then third type of cell, neutrophils. They are neutral to both dye. They are stained by both dye, and you will get a purple color neutrophils after staining. So lifespan. Okay. Then again WBC में आता है आपका A granulocytes. These three are known as the granulocytes. These three are the granulocytes. Now A granulocytes. A granulocytes कौन सा है आपका? तो monocytes and lymphocytes. Monocytes and lymphocytes. So both these two also are having defense function. They are also having immunity function. So monocytes will live for 2 to 5 days. Lymphocytes will live for 0 to 1 day. So they can ask you question like this: which of the following WBC has the lowest lifespan? याद रखना है आपको, lymphocytes they have lowest lifespan. सबसे कम लाइफस्पैन किसका होता है? lymphocytes का. लो, है ना. लोवेस्ट लाइफस्पैन ऑफ RBC, सॉरी लोवेस्ट लाइफस्पैन ऑफ WBC that is a lymphocytes, है ना. lymphocyte में दो टाइप आता है. there are two type in the lymphocyte. First one is a T lymphocyte and second one is a B lymphocyte. There are two type, T lymphocyte, B lymphocyte. Monocytes also. Monocyte जब mature होता है, so after maturation of monocyte can be differentiated into macrophages. Monocyte से ही आपका macrophages बनता है. Monocyte से आपका क्या बनता है? Macrophages.
Monocytes are differentiated and converted into macrophages. So they are also having phagocytic function. Phagocytosis क्या होता है अपन देखेंगे, right? So T lymphocyte, B lymphocytes, right? Now next type of blood cell, platelet or platelets or also known as the thrombocytes. प्लेटलेट को ही अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स. व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट? उनका रोल क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग. दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग, दैट इज द ब्लड क्लॉटिंग, आल्सो नोन एज द हीमोस्टेसिस. व्हाट इज द लाइफ ऑफ योर प्लेटलेट? 8 to 11 days, है ना, 8 to 11 days इनका लाइफ स्पेन होता है. तो प्लेटलेट आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, आल्सो नोन एज है ना, प्लेटलेट आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड कोएगुलेशन, है ना. देयर इज वन इन्फेक्शन. देखो यहाँ पे एक इन्फेक्शन होता है, आपको भी हो चुका होगा, मुझे भी होता, डेंगू इन्फेक्शन. तो इन केस ऑफ डेंगू इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन, डेंगू इन्फेक्शन. इन केस ऑफ डेंगू इन्फेक्शन व्हाट हैपेंस, योर प्लेटलेट डिक्रीजेस. आपका जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट कम होगा. इन केस ऑफ डेंगू इन्फेक्शन प्लेटलेट डिक्रीजेस, एंड दैट्स व्हाई in case of dengue infection there might be a bleeding in the GIT में ब्लीडिंग हो सकता है, आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होता है. तो दैट्स व्हाई आपको एक वोमिटिंग होता है डेंगू में, जो वोमिटिंग विद द ब्लड होता है ना, वोमिट विद द ब्लड, है ना. सो दैट इज ड्यू टू डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट एंड देयर इज अ ब्लीडिंग. आपका प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो आपका ब्रेन में भी ब्लीडिंग हो सकता है, ब्रेन में भी क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है. So that's why dengue is a very serious threat. Dengue is a very serious threat. अपन बोलते हैं सर डेंगू क्या है, डेंगू तो 2 दिन में होता है, बुखार आता है निकल जाता है. नहीं, डेंगू इज अ वेरी सीरियस थ्रेट, है ना. मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ, ठीक है. सो आई एम ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दैट थ्रेट. तो डेंगू के कारण क्या होता है, प्लेटलेट कम हो जाता है आपका, और क्या होता है, ब्लीडिंग होता है ना. उसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं. नाउ व्हाट इज डेंगू वायरस? Dengue is nothing but a kind of flavivirus. It is known as a flavivirus. Dengue is because of the one virus known as a flavivirus. एक वायरस होता है flavivirus, and that decreases your platelet. Okay, so in that case platelet should be increased. Number of platelet count should be raised. ठीक है, ये additional knowledge है. Now we'll see the next point. You can see over here the neutrophils. Okay, first one is the neutrophils, they will look like this. Okay, so याद रखना है RBC क्या होता है, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है. your RBC will not have nucleus. RBC they are not having nucleus क्या होता है, नहीं है RBC. There is no nucleus in the RBC, right? But there is a nucleus in the WBCs. WBC में क्या है, न्यूक्लियस होता है. In the mature WBC, you will have a nucleus. So you can see here is a nucleus. Now, depending on the nucleus also, they are differentiated. WBC nucleus के ऊपर भी differentiate होता है. जैसे for example neutrophil. In the neutrophil you will have है ना न्यूक्लियस विच इज अ मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस. मतलब देखो यहाँ पे एक लोब है, यहाँ पे एक लोब है, और यहाँ पे एक लोब है. तो न्यूट्रोफिल्स दे आर द मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस व्हाइट ब्लड सेल. न्यूट्रोफिल्स आर द मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस व्हाइट ब्लड सेल्स. यहाँ पे देखना है. एंड यू विल फाइंड अ ग्रैन्युल्स इन द साइटोप्लाज्म. यहाँ पे देखो ग्रैन्युल्स, फाइन ग्रैन्युल्स विद द इओसिन एंड मिथिलीन ब्लू स्टेन. इओसिन क्या करता है ना, इओसिन विल स्टेन अ रेड कलर एंड मिथिलीन ब्लू विल स्टेन अ ब्लू कलर. ठीक है, तो ब्लू एंड रेड दोनों कलर दिखेगा आपको न्यूट्रोफिल्स में. दैट्स व्हाई दे आर द न्यूट्रल, है ना, दे आर द न्यूट्रल. नाउ लेट्स सी द इओसिनोफिल. इओसिनोफिल मतलब क्या है, so they are known as also known as acidophils. Eosinophils are also known as acidophils. Why? Because they are stained by acidic dye known as eosin. Eosin क्या है, acidic dye that will stain a particular type of cell known as a eosinophil. तो eosinophil में देखो जो granules है साइटोप्लाज्म में they are stained as a red color by the eosin. And nucleus क्या है इसका, देखो यहाँ पे nucleus is bilobed, दो है ना इसमें लोब, एक लोब है, ये एक लोब है. न्यूक्लियस इज अ बाइलोब्ड. तो न्यूक्लियस इज हियर इज अ मल्टी लोब्ड.
in a neutrophils. Nucleus is a bilobed in the eosinophils. Now let's come to the basophils. You can see over here. So basophils, they are stained by methylene blue stain. So they will be blue in a color. And again here you can see here is a one lobe and here is a one lobe. So again bilobed nucleus, though in a nucleus. Now monocytes. In a monocytes, so the nucleus is pushed to one side. Monocytes में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है it will look like a comma shaped, है ना, और it will be nucleus pushed at one side. देखो न्यूक्लियस ये साइड पे पुश हो चुका है, that is a monocytes. Okay, clear cytoplasm, you will get a clear cytoplasm. Then lymphocytes कैसे, clear cytoplasm but nucleus is occupying most of the cytoplasm. So cytoplasm है, most of the cytoplasm will be occupied by nucleus, that is a lymphocytes. ठीक है, याद रखना है WBC they has a nucleus after maturation. WBC after maturation they will get a nucleus, but RBC is a non-nucleated. RBC is a non-nucleated. Now very important. So what is the role of nucleophile? What is the role of your leukocyte? What is the role of basophil? What is the role of neutrophil? What is the role of eosinophil? Monocyte, lymphocyte का रोल क्या होता है? Very important. Lot of times they already ask question on this. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले स्टेनिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं. स्टेनिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. एंड अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग है ना, नेम ऑफ आरबीसी एंड देन इन ए शॉर्ट देयर डिस्क्रिप्शन. तो फर्स्ट WBCs क्या होता है? WBCs are also known as the leukocytes and they has an important function in the defense and immunity. Defense and immunity. What they will do? Suppose आपको कोई infection हो गया throat में, so what will happen? So WBC will go at an infection site and they will destroy the infection or antigen. Now WBC will have a nucleus and some of them have a granules in their cytoplasm. And based upon that, they are called as the granulocytes. I hope I am audible to you. 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 थोड़ा सा लाइट का इशू हो चुका है यहाँ पे. I hope I am audible to you. 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 इशू यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, अपन चालू. So remember, leukocytes, they are very important and their main function is nothing but the defense and immunity. They will destroy the antigen, they will destroy the infection, and some of them will have a nucleus and granules in their cytoplasm. So those WBC which are having granules in the cytoplasm known as the granulocytes, and जिन केस में granules नहीं है उनको बोलेंगे अपन agranulocytes. Granulocytes are also known as the polymorphonuclear leukocytes. Polymorphonuclear leukocytes. Okay, so remember. So WBCs which are having granules in their structure, they are known as the granulocytes. WBC which are not having granules in their structure, they are known as the agranulocytes. Okay? So granulocytes are also known as the polymorphonuclear leukocytes. In that you have neutrophil, eosinophil and basophil. Agranulocyte में क्या आता है? Monocytes and lymphocytes. Right?
नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रोफिल? न्यूट्रोफिल का रोल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रोफिल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. नाउ व्हाट हैपेंस? न्यूट्रोफिल्स एज द नेम इंडिकेट, उनका नाम में क्या है? न्यूट्रोफिल. आप बोलते हो ना नाम में क्या रखा है, तो नाम में बहुत कुछ रखा है, जैसे न्यूट्रोफिल, तो इसके नाम में क्या है? न्यूट्रोफिल. मतलब क्या है? तो इट विल न्यूट्रलाइज समथिंग. व्हाट इट विल न्यूट्रलाइज? It will neutralize the infection. Neutralize the infection. Neutrophils, they are known as active scavengers. They are known as active scavengers, and they are known as active scavengers. They will protect your body from the bacterial invasion. So whatever bacterial infection or invasion is there, जैसे आपको बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो गया तो आपका सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स वहां जाएंगे. न्यूट्रोफिल्स विल हैज दैट बैक्टीरिया, न्यूट्रोफिल्स विल एनग्लब दैट बैक्टीरिया एंड न्यूट्रोफिल विल डिस्ट्रॉय दैट बैक्टीरिया. ठीक है. सो न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे? न्यूट्रोफिल एज द नेम इंडिकेट. आप बोलते हो ना नाम में क्या रखा है, तो नाम में वैसे तो बहुत कुछ रखा होता है. नाम में वैसे तो बहुत कुछ रखा होता है. जैसे न्यूट्रोफिल का नाम क्या है? न्यूट्रोफिल. व्हाई? बिकॉज दे विल न्यूट्रलाइज समथिंग. दे विल neutralize something. They will neutralize what? They will neutralize the infection. Neutrophil, they are known as active scavengers and they will protect the bacterial invasion. जैसे बैक्टीरिया आपके बॉडी में आता है, इन्फेक्शन करता है, so neutrophils will go at a infection site. They will catch the bacteria, they will eat the bacteria, they will digest, they will destroy. So that is known as a phagocytosis. So they are a phagocytic in nature. देखो neutrophils, they are a phagocytic cell in a phagocytosis. So neutrophils, they will phagocytosize the bacteria, they will destroy the bacteria. Okay, they are attracted by the chemicals released from damaged cell. जैसे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, आपका सेल डैमेज होगा, जैसे जहाँ पे इन्फेक्शन होगा वहाँ पे सेल क्या होगा? डैमेज होगा. जैसे इफ यू गॉट अ थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट में इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे थ्रोट के जो सेल है, एपिथेलियल सेल्स, वो डैमेज होंगे और वहाँ से केमिकल्स रिलीज होंगे, नोन एज इंफ्लेमेटरी केमिकल्स. ओके. नाउ न्यूट्रोफिल्स, दे आर अट्रैक्टेड बाय द केमिकल्स रिलीज्ड बाय द डैमेज्ड सेल एंड इन्फेक्शियस टिश्यू. नाउ द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स टुवर्ड्स द इन्फेक्शन साइट, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स टुवर्ड्स द इन्फेक्शन साइट इज नोन एज अ कीमोटैक्सिस. के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल, देखो यहाँ पे न्यूट्रोफिल का मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स टुवर्ड्स द इन्फेक्शन टिश्यू, टुवर्ड्स द इन्फ्लम टिश्यू, नोन एज अ कीमोटैक्सिस. याद रखना है. न्यूट्रोफिल्स, दे आर एक्टिव स्कैवेंजर्स, दे आर हैविंग phagocytic function. तो न्यूट्रोफिल्स, दे आर अ phagocytic cell. Phagocytic मतलब क्या है? They will catch the infection, they will eat that bacteria, they will destroy that bacteria. Phagocytosis. And movement of neutrophils towards the infection site known as a chemotaxis. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एक बार. Now they are involved in the phagocytosis of microbes. देखो यहाँ पे लिखा है in the invented tissue. The granules of basophil, the granules of neutrophil consist of a lysozyme. Granules of neutrophil consist of a lysozyme. तो ग्रैनुल्स जो होते हैं न्यूट्रोफिल के, उसमें क्या होता है? लाइसोजाइम. सो व्हाट इज लाइसोजाइम? लाइसोजाइम क्या होता है? लाइसोजाइम इज नथिंग बट द इट इज द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स. जैसे फॉर एग्जांपल इन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इन द लाइसोजाइम यू हैव, है ना, कार्बोहाइड्रेट में मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, जैसे ग्लूकेज होता है उसमें, प्रोटीएज होता है उसमें, लाइपेज होता है. So these are the enzymes which are present in the lysozyme. देखो न्यूट्रोफिल्स क्या है? They are phagocytic in nature. They are attracted by chemicals which are released upon the infection of cell, known as the chemotaxis. So movement of neutrophils towards the infected tissue. Movement of neutrophils towards the infection tissue known as a chemotaxis. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. And they will engulf the bacteria and they will digest. How? What helps to metabolizing enzymes होते हैं, and that's why neutrophils, they are able to digest the bacteria. Now second thing is nothing but the basophil.
है ना. तो बेसोफिल क्या होता है, दे आर स्टैंड बाय मिथिलीन ब्लू नोन एज द बेसोफिल्स. और बेसोफिल का रोल क्या होता है, बेसोफिल्स आर ओके, दे आर आल्सो हैविंग ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म. दे आर आल्सो हैविंग ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म एंड देयर ग्रैन्यूल्स कंसिस्ट ऑफ हिपेरिन एंड हिस्टामाइन. तो बेसोफिल में क्या हिपेरिन एंड हिस्टामाइन होता है एंड सम अदर केमिकल्स which will promote the inflammation. बेसिकली है ना, बेसिकली बेसोफिल्स का काम क्या है कि दे विल गो एट अ इन्फेक्शन साइट एंड दे विल डीग्रैनुलेट. सो बेसोफिल विल आल्सो गो एट अ इन्फेक्शन साइट एंड दे विल डीग्रैनुलेट एंड आफ्टर द डीग्रैनुलेशन there is a release of heparin and histamine. So what heparin will do? Heparin is a natural anticoagulant. Heparin क्या है? Heparin is a natural anticoagulant. Heparin natural anticoagulant है तो it will prevent the clotting of blood. So heparin will prevent the clotting of blood. Suppose अगर आपका infection blood में है, suppose if there is infection to blood vessel, so basophils will go, it will degranulate, they will release the histamine and heparin. So heparin will act as anticoagulant and histamine will promote the inflammation. ठीक है, तो हिस्टामाइन क्या करेगा, इंफ्लेमेशन करेगा, है ना. बेसोफिल्स आर दे आर इन्वॉल्व इन द बेसिकली इंफ्लेमेशन. तो ये बेसोफिल्स क्या करेंगे, बेसिकली इंफ्लेमेशन करेंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज इओसिनोफिल. इओसिनोफिल्स व्हाट, so eosin they are sent by eosin dye, so they are also capable for phagocytosis. तो देखो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, phagocytosis करता है ना. बेसोफिल क्या करता है, it will promote inflammation. So neutrophil phagocytosis, basophil inflammation and eosinophil again capable of phagocytosis. But what type of bacteria? न्यूट्रोफिल जो है तो वो भी phagocytosis करता है और eosinophil वो भी phagocytosis करता है. तो दोनों भी है, तो डिफरेंस क्या है इसमें. If neutrophils are phagocytic in nature, if eosinophils are phagocytic in nature, then what is the difference? ऐसा थोड़ी है कि आपके बॉडी में बहुत सारी जगह है तो भगवान ने आपको दो टाइप के सेल दे दिए, दोनों सेल का एक ही काम है. देयर इज अ डिफरेंस. व्हाट इज दैट डिफरेंस? सो बट eosinophils they are less active than neutrophils. Eosinophils they are less active than neutrophils and they have a role in the neutralizing big worms. Big worms are large size bacteria. So eosinophil will digest a large size bacteria, neutrophil will digest a small size bacteria. That is the difference. Okay, now large size bacteria cannot be easily phagocytosed by neutrophils. That's why eosinophil, and eosinophil will digest large size bacteria and they also promote the inflammation by releasing the toxic chemicals, but they can decrease the inflammation by the histaminase. मतलब क्या कि eosinophil has a one enzyme known as a histaminase. तो है ना, तो है ना, बेसोफिल में क्या होता है, हिस्टामाइन होता है. बेसोफिल हैज अ हिस्टामाइन बट eosinophil has a histaminase. Histaminase मतलब क्या है, एंजाइम दैट कैन हाइड्रोलाइज द हिस्टामाइन. तो eosinophil है ना, eosinophil बेसिकली दे आर द एंटी इंफ्लेमेटरी. देखो न्यूट्रोफिल दे विल कॉज phagocytosis of small size bacteria and the movement of neutrophils is affected by a chemicals released upon the inflammation. है ना, जो भी सेल का ब्रेकडाउन होता है, सेल का इंफ्लेमेशन होता है, तो ये केमिकल्स रिलीज होते हैं and that chemicals will attract the neutrophils towards the infection site. Now the movement of neutrophils towards the infection site is known as chemotaxis and they are phagocytic in nature because they have lysozyme. In the lysozyme they have proteolytic enzyme, they have lipid metabolizing enzyme, they have an enzyme is responsible for the breakdown of carbohydrate, lipids and proteins. Now basophil they are involved in the promotion of inflammation. ये इन्फ्लेमेशन करेंगे because in the granules of basophil you have heparin and histamine. Eosinophil again they are phagocytic in nature but they will phagocytosize a big size worm and also have one enzyme and histaminase. Histaminase means they will decrease the inflammation by histamine, but they have other chemicals which causes the inflammation. Next cell होता है आपका monocytes. Next one is the monocytes. Monocytes they are the largest WBC. है ना, क्वेश्चन आ सकता है आपको, लार्जेस्ट WBC इन साइज, so that is nothing but the monocytes. Monocytes are the largest WBC in the size. तो monocytes क्या होता है, largest WBC in the size. In terms of size, monocytes are the largest WBC.
they produces the one chemical known as interleukin. तो monocytes क्या produce करते हैं? One chemical. They will release one chemical known as interleukin 1, which increases the body temperature. तो ये monocytes क्या करते हैं? देखो आपको जब भी इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन होने के बाद में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स वो इन्फेक्शन साइट के ऊपर जाते हैं. जहाँ पे भी मतलब आपको अगर इन्फेक्शन गले में हुआ है तो वहाँ पे WBC ज़्यादा जाएंगे. WBC will move towards the infection site. All WBC, neutrophil, basophil, eosinophil, monocytes. So what basophil do? They will release the histamine and heparin, cause inflammation. What neutrophils will do? They will catch a bacteria and they will digest it. They will destroy it by phagocytosis. If bacteria is small, so if bacteria is large in size, so eosinophil will digest that bacteria. Okay, but monocytes, what will they do? Monocytes will also go at an infection site. They will release one chemical known as interleukin 1. So what interleukin 1 will do? It will act on a temperature regulating center in the hypothalamus in the brain. तो brain में जो temperature regulating center होता है तो interleukin 1 will act on hypothalamus and there is increase in the body temperature. Increase in the body temperature. तो जब भी आपको इन्फेक्शन होता है, आपको बुखार आता है, क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द इंटरलूकिन. ऑल्सो स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबुलिन बाय द लिवर. ये ग्लोबुलिन को भी प्रोडक्शन करता है एंड ऑल्सो इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट. इसका ये काम है. बिकॉज दे यूज्ड टू आस्क यू द रोल, ऑलरेडी आस्क क्वेश्चन ऑन दिस लाइक दिस, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ WBC विद देयर रिस्पेक्टिव रोल इन द बॉडी. ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ WBC विद देयर रिस्पेक्टिव रोल. तो रोल मालूम होना चाहिए आपको सबका, है ना. Next cell is nothing but the lymphocytes. Next cell is nothing but the lymphocytes. So they are the smaller in size than monocytes. Monocytes से small होता है size में. Lymphocytes are the smaller than monocytes and they are found in the lymphatic tissue. जो lymphatic tissue होता है, जैसे lymphatic tissue in the lymphatic tissue, जैसे for example lymph nodes and spleen. Spleen lymph node क्या है? Lymphatic tissue. When we will see the lymphatic system, at that time I will explain you. Lymph nodes and lymphatic tissue. Lymph nodes, spleen, thymus, they are the lymphatic tissue. So there are two type of lymphocytes. एक होता है T lymphocytes और एक होता है B lymphocytes. एक होता है T lymphocyte, एक होता है B lymphocytes. T lymphocytes means what? So lymphocytes, they will get matured in the thymus gland, right? And B lymphocytes means they are get matured from bone marrow, है ना. So monocytes after maturation they are converted into macrophages. यहाँ पे और एक याद रखो, macrophages. So monocytes are also converted into macrophages. They are also having role in the defense function. They are also phagocytic in nature. But यहाँ पे monocytes क्या है? Macrophages क्या है? Macrophages will digest the live cell as well as डेड सेल. जो डेड सेल डेब्रिज है, डेड सेल डेब्रिज ऑफ बैक्टीरिया, आपका खुद का सेल, दैट विल बी एनग्लोब्ड बाय मैक्रोफेजेस. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज अ प्लेटलेट. प्लेटलेट आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट. प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट? सो दे आर इन्वॉल्व इन द हीमोस्टैसिस. दे आर इन्वॉल्व इन द हीमोस्टैसिस. हीमोस्टैसिस मतलब क्या? स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग, also known as a blood coagulation or clotting. इसको अपन क्या बोलते हैं? blood coagulation और clotting. Clotting और blood coagulation और hemostasis or stopping of bleeding is the function of thrombocytes. Now their production is stimulated by one hormone. तो इनका प्रोडक्शन कौन करता है? There is a production of platelet by thrombopoietin. There is one hormone known as thrombopoietin. Okay, thrombopoietin will released and it will produce a platelet in the liver. What is the normal count? इसका normal count देखो क्या है? 2 to 3.5 lakhs cubic millimeter. नॉर्मल काउंट कितना होता है? 2 to 3.5 लाख क्यूबिक मिलीमीटर सेल्स, है ना. वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखो आपको आरबीसी का, है ना, वी हैव सीन द आरबीसी. इन दैट आई हैव टोल्ड यू देयर इज वन हार्मोन व्हिच कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, दैट इज नोन एज, है ना, इरिथ्रोपोएटिन. तो आरबीसी का इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन होता है और प्लेटलेट का होता है थ्रोम्बोपोएटिन. तो प्लेटलेट विल प्रोड्यूस्ड बाय थ्रोम्बोपोएटिन, आरबीसी विल प्रोड्यूस्ड बाय इरिथ्रोपोएटिन
but who will produce a WBC? Which hormone will produce a WBC? WBC को कौन करता है? WBC's production is done by, remember, CSF. The hormone responsible for the production of WBCs क्या है भाई? CSF. CSF मतलब क्या? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अरे भाई सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या संबंध है इसमें? बट फिर भी मास्टर ने लिखा है CSF. मतलब क्या? CSF मतलब क्या है? C for colony. C for colony, S for stimulating, and F for factor. So what is that? Colony stimulating factor. So colony stimulating factor और colony forming unit, इनको और एक बोलता है colony forming factor ना, colony stimulating factor है ना. There are two factors. One is known as a GCSF. GCSF and GMCSF. GMCSF. अभी GCSF मतलब क्या? It is known as a granulocyte colony stimulating factor. And GMCSF मतलब क्या? Granulocyte monocyte colony stimulating factor. So these are the hormones which control the production of WBC. CSF मतलब क्या? Colony stimulating factor. Right? So we have seen in the cancer. जो कैंसर देख रहे थे उसमें ये था colony stimulating factor, GMCSF, GCSF. What is that? So these are the hormones, these are the protein which produces the WBCs. Okay. RBC का कौन है? erythropoietin. RBC production is done by erythropoietin. WBC production is done by colony stimulating factor, and platelet production is done by this thrombopoietin. Platelet production कौन करता है? Thrombopoietin. Right? Thrombopoietin. I hope you are getting my points, and I hope you are understanding. We'll see the next point now. Next point. Next point is nothing but the, you can see over here the WBCs. WBCs क्या है? There are three. There are granulocytes. Granulocytes there are three types. Basophil, neutrophil, and eosinophil. Basophil, neutrophil, eosinophil. यहाँ पे देखो normal leukocyte count. So normal leukocyte count है ना? They can ask you question. So neutrophils is around 2.5 to 7.5 into 10 raised to 9 cells per liter. 2.5 to 7.5 into 10 raised to 9 cells per liter. That is a neutrophil normal count. Eosinophil है ना? But in terms of percentage, 40 to 75% of total white blood cell. Neutrophils देखो 2.5 to 7.5 into 10 raised to 9 per liter number of cells per liter, and 40 to 75% of total WBCs. Eosinophil देखो 0.04 to 0.44 और 1 to 6% है ना, 0.004 to 0.44 cells into 10 raised to 9 per liter और 1 to 6%. बेसोफिल क्या है? 0.015 to 0.1 into 10 raised to 9 per liter और less than 1%. ए ग्रेनुलोसाइट में क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट. तो मोनोसाइट का सेल का नंबर ऑफ काउंट कितना होता है? 0.2 to 0.8 into 10 raised to 9 cells per liter और 2 to 10%. Then lymphocyte 1.5 to 3.5 cells into 10 raised to 9 cells, 10 raised to 9 है ना, मतलब 1.5 to 3.5 into 10 raised to 9 cells per liter और you can see 20 to 50% है ना. तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अगर आपने 100% कंसिडर किया टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है ना, तो उसमें का 20 to 50% क्या रहेगा? लिम्फोसाइट. 2 to 10% क्या रहेगा? मोनोसाइट. लेस देन 1% क्या रहेगा? बेसोफिल है ना. 1 to 6% यूसिनोफिल एंड 40 to 75% न्यूट्रोफिल. देखो सबसे ज़्यादा सेल कौन से पाए जाते हैं है ना, एक तो लिम्फोसाइट है और एक तो क्या है? न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, 40 to 75% न्यूट्रोफिल होता है. नाउ व्हाट डू मीन बाय फैगोसाइटोसिस? यू कैन सी ओवर हियर फैगोसाइटिक एक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स. तो मान लीजिए सपोज दिस इज इन्फेक्शन. ये क्या है? माइक्रोबियल इन्फेक्शन है. So this
neutrophils will move toward the infection site. They will go at infection. They will catch the infection. They will catch the infection, है ना, and they will engulf the bacteria. देखो साइटोप्लाज्म में आ गया बैक्टीरिया, देन है ना यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आ गया बैक्टीरिया, and in the cytoplasm of neutrophil you have lysozyme. Lysozyme what has a, in the lysozyme you have proteolytic enzyme, you have lipid, है ना, you have lipase, है ना, you have आपको वहाँ पे ग्लूकेज, लाइपेज, प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं. दे विल ब्रेक डाउन द बैक्टीरिया. व्हाट इज बैक्टीरिया? बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरियल सेल क्या होता है? वो सब क्या होता है? प्रोटीन होता है, उसमें लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है. सो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स लाइसोजाइम में होते हैं. लाइसोजाइम किसमें होता है? ग्रेनुल्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल विल गो एट इन्फेक्शन साइट, दे विल कैच द बैक्टीरिया, दे विल डाइजेस्ट इट. दैट इज नोन एज द फैगोसाइटोसिस. दैट क्लियर? देखो कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा. ओके, सो कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा. सो इफ यू सेंट्रीफ्यूज योर ब्लड, आपने अगर ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया तो यू विल गेट अ टू कंपोनेंट, सुपरनेटेंट क्लियर फ्लूइड, सुपरनेटेंट क्लियर वाटरी फ्लूइड नोन एज प्लाज्मा, एंड देन सेल फ्रैक्शन. ओके, बट व्हाट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा? प्लाज्मा में क्या क्या रहेगा? सो कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, सो 90 to 93% वाटर इज देयर इन अ प्लाज्मा. प्लाज्मा में क्या है? 90 से 92% क्या रहेगा? वाटर रहेगा. 92 to 93, 92-93% water in a plasma. So remaining is nothing but the solid. 7 to 8% solid is there. Now 7 to 8% solid component रहेगा प्लाज्मा में. So what is that solid? So in that solid you may have inorganic substances, like for example, you may have inorganic substances, you may have organic substances. So out of the 7 to 8% solid content of plasma, उसमें क्या रहेगा? Organic and inorganic substances. So 92 to 93% water रहेगा, remaining will be solid, 7 to 8% solid. Out of that also there is organic substances, there is inorganic substances, there is a gases also. So what are the organic substances in the plasma? Plasma में organic substances कौन से होते हैं? So organic substance like a plasma proteins होते हैं इसमें. So in the plasma proteins you have albumin, you have globulins, you have fibrinogen, you have hemoglobin, you have acid glycoprotein, you have and lipoproteins. बहुत सारे होते हैं. We will discuss one by one. Don't worry. Then in the organic substances again in the plasma you have amino acid. तो amino acid कहाँ से आएगा? जो भी आपका डाइजेशन हो चुका है, वट एवर डाइजेशन इज देयर, वट एवर एब्सॉर्प्शन इज देयर, सो फ्रॉम दैट अमाइनो एसिड्स आर देयर, essential amino acids, non-essential amino acids, right? So in the plasma you have carbohydrate like glucose, lipids you have in the plasma, like lipids में आता है triglycerides, cholesterol, phospholipids, है ना. Then hormonal secretions, so hormones, so internal secretion, that is hormones. Again in the plasma you have different type of enzymes. In the plasma you have amylase. Amylase मतलब क्या? Enzyme responsible for the breakdown of sugars. Sugar को break down करने वाला enzyme कौन सा है? Amylase. Then carbonic anhydrase, है ना. Carbonic anhydrase क्या करता है? Breakdown of carbonic acid, bicarbonate. Then acid phosphatase, alkaline phosphatase, lipase, esterase, protease, and transamine. These type of enzymes are also present in the plasma. Then non-protein nitrogenous substances. ये प्लाज्मा में non-protein nitrogen substances कौन सा है? जैसे अमोनिया है ना, it is a metabolic waste of your proteins and amino acid. Creatinine is also metabolic waste of protein. Creatinine and creatine both are there. Creatinine, then xanthine is there, hypoxanthine, urea, यूरिक एसिड, दे आर द वेस्ट प्रोडक्ट, है ना. तो प्लाज्मा में क्या है कि प्लाज्मा में 90% वाटर है, बाकी क्या है? बाकी डिजॉल्व सब्सटेंसेस है ना, गैसेस भी होता है. तो उसमें सब्सटेंस में क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है. ऑर्गेनिक में प्लाज्मा प्रोटीन्स आता है, अमीनो एसिड आता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट. वेस्ट प्रोडक्ट में क्या आता है आपका? ये सभी क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है, राइट. Now inorganic substances in the plasma. The inorganic component of
plasma. So you will have sodium, calcium, potassium, magnesium, bicarbonate, chloride, phosphate, iodine, iron and copper. तो प्लाज्मा में ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ठीक है. नाउ गैसेस इन द प्लाज्मा, यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड, यू हैव ऑक्सीजन. नाइट्रोजन इज रेयरली प्रेजेंट, नाइट्रोजन बहुत रेयरली होता है, एंड देयर इज नो रोल ऑफ नाइट्रोजन. रोल ऑफ नाइट्रोजन अननोन. कि बाबा ऑक्सीजन का रोल मालूम नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, बट नाइट्रोजन का रोल मालूम नहीं, नाइट्रोजन गैस है. दिस इज द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा में क्या क्या है, ये सब है, राइट. नेक्स्ट पार्ट विल सी नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, pH of different body fluids. pH of different body fluids. Sometimes they used to ask question on this pH of different body fluids, है ना. I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. You are getting my points. So pH of body fluids. तो देखो गैस्ट्रिक एसिड pH कितना होता है, गैस्ट्रिक जूस मतलब क्या है, ये Cl. इन द गैस्ट्रिक कंटेंट तो यू हैव एसिड. गैस्ट्रिक जूस का pH होता है, और है ना, गैस्ट्रिक एसिड का pH होता है 1.2 to 3. इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो. देन लेमन जूस, आपको जो नींबू का रस होता है, नींबू का रस 2.3 pH होता है, एसिडिक है. विनेगर का pH होता है 3. कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो आपका है ना, जो आपका कोका कोला है ना, गाना बोलते हो ना आप, कोका कोला तू शोला शोला तू, है ना, कोका कोला का pH कितना होता है, 3 to 3.5. दैट इज अ कैफीन कंटेनिंग कार्बोनेटेड बेवरेजेस, है ना. तो उसका भी pH होता है 3 to 3.5. नेक्स्ट है ऑरेंज जूस. ऑरेंज जूस का pH कितना होता है, ऑरेंज जूस हैज अ pH ऑफ 3.5, राइट. देन वजाइनल फ्लूइड, इन द वजाइनल फ्लूइड pH इज 3.5 to 4.5, है ना. ये तो आपको एडवर्टाइजमेंट भी पता होगा, 3.5 to 4.5. टोमेटो जूस तो 4.2 pH. pH ऑफ CSF cerebrospinal fluid 7.4. पैंक्रियाटिक जूस 7.1 to 8.2. देन pH ऑफ बाइल एसिड और गॉल ब्लैडर 7.6 to 8.6. देन कॉफी का pH होता है 5. देन यूरिन का pH होता है 6 to, यूरिन का pH होता है 4.6 to 8. देन सलेवा का pH होता है 6.35 to 6.8. नाउ है ना, pH इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं बोलूंगा कहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, है ना. pH ऑफ मिल्क होता है 6.8. pH ऑफ डिस्टिल वाटर होता है 7, मतलब न्यूट्रल. pH ऑफ ब्लड अराउंड 7.35 to 7.45. जो सीमन होता है आपका, उसका pH होता है 7.20 to 7.6, है ना. मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब अल्कलाइन होता है ये 10.5, है ना. सोडियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नोन एज 14 pH. pH ऑफ टीयर्स 6.5 to 7.5. देखो जितने बॉडी फ्लूइड्स है, बॉडी फ्लूइड के pH के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. नाउ यू शुड नो द pH ऑफ स्टमक. pH ऑफ स्टमक इज 1.2 to 3. pH ऑफ वजाइनल फ्लूइड 3.5 to 4.5. pH ऑफ CSF 7.4. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यहाँ पे कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर नहीं है, यहाँ पे क्या है, cerebrospinal fluid, the fluid present in the subarachnoid space of your spinal cord, right. Then pancreatic juice, in the pancreas you have alkaline pH 7.1 to 8.2. bile acid or gallbladder again alkaline 7.6 to 8.6, है ना. pH ऑफ सलाइवा, है ना. pH ऑफ यूरिन पूछा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. pH ऑफ यूरिन 4.6 to 8. pH ऑफ सलाइवा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है 6.35 to 6.85, है ना. pH ऑफ ब्लड पूछा है 7.35 to 7.45. pH ऑफ टीयर भी पूछा है 6.5 to 7.5. मतलब टेबल है एक, pH मालूम होना चाहिए आपको, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट विल सी इन द ब्लड ओनली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इतना क्यों बोल रहा हूँ वेरी वेरी, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ना. तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. नाउ पहला क्वेश्चन आ सकता है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, हाउ मेनी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर देयर. क्या, हाउ मेनी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर देयर.
आप बोलेंगे सर इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा है ना, हाउ मेनी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर देयर, तो ऑप्शन में आएगा आपको 10, 12, 13, 16। तो नॉर्मली ना आप बोलेंगे सर इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा है लास्ट कितना है 13 है, सो हाउ मेनी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर देयर 13। मोस्ट ऑफ द बुक्स में भी क्या दिया है 13, बट 13 इज नॉट देयर, so there are 16 blood clotting factors. Remember, there are 16 blood clotting factors. I will explain you, don't worry, one by one अपन देख लेते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, एटलीस्ट 10 to 12 times question has been asked from the blood clotting factors, right? So first is nothing but the first blood clotting factor ना, पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। व्हाट डू मीन बाय ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स? दे आर नथिंग बट द प्रोटीन्स। व्हाट आर दे? दे आर द प्रोटीन्स, दे आर द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन, दे आर द ग्लाइकोप्रोटीन, दे आर द इनएक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है ग्लाइकोप्रोटीन? दे आर इनएक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन इन द प्लाज्मा। So they are inactive, they are activated during the blood coagulation process, they are activated during the blood clotting process, you know. Now they are the protein, they are the glycoproteins, they are inactive in the blood, but they are activated upon the injury, upon the injury or upon the bleeding. During bleeding they are activated, during the injury they are activated, you know. So how many blood clotting factors are there? 16 blood clotting factors are there, 16. So most of the books में आपको मिलेगा 13. Most of the books they have given the 13 blood clotting factors, but there are 16. I will explain, don't worry. So first blood clotting factor is a fibrinogen. So question कम से कम 3 बार आ चुका है। The blood clotting factor number 1 there is a fibrinogen. Blood clotting factor number 2 prothrombin, 2-3 बार ये भी पूछा है, ठीक है। Blood clotting factor number 3 known as a टिश्यू फैक्टर और आल्सो नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन, आल्सो नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर है ना। देन फैक्टर नंबर 4, फैक्टर नंबर 4 इज इनऑर्गेनिक कैल्शियम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, इनऑर्गेनिक कैल्शियम। फैक्टर नंबर 4 इनऑर्गेनिक कैल्शियम। फैक्टर नंबर 5 नोन एज लेबाइल फैक्टर और प्रोएक्सेलरिन और एसी ग्लोबुलिन। ये आपको 2-3 बार लेने हो रहा हूँ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्योंकि अभी भी एक बार होगा और जब कोएगुलेंट एंटीकोएगुलेंट पढ़ेंगे उसमें भी एक बार होगा आपको, ठीक है। सो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 फाइब्रिनोजन, फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 3 टिश्यू फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर नंबर 4 कैल्शियम, फैक्टर नंबर 5 लेबाइल फैक्टर और प्रोएक्सेलरिन और एसी ग्लोबुलिन। फैक्टर नंबर 6, फैक्टर नंबर 6 है क्या? रिमेंबर फैक्टर नंबर 6 मोस्ट ऑफ द बुक्स दे हैव नॉट मेंशन्ड फैक्टर नंबर 6। फैक्टर नंबर 6 बहुत सारे बुक्स बोले कि फैक्टर नंबर 6 नहीं है, बट फैक्टर नंबर 6 है। फैक्टर नंबर 6 नहीं है ऐसा बहुत सारे बुक बोलते हैं आपको, बट देयर इज अ फैक्टर नंबर 6 क्योंकि रिसेंटली हो चुका है। तो व्हाट इज द फैक्टर नंबर 5? दैट इज नोन एज अ लेबाइल फैक्टर और प्रोएक्सेलरिन। देखो प्रो है ना, प्रोएक्सेलरिन, प्रोएक्सेलरिन फैक्टर नंबर 5 है प्रोएक्सेलरिन। That's why factor number 6 is accelerant. Factor number 6 क्या है? Accelerant. Factor number 6 is accelerant. Factor number 5 is pro-accelerant. Factor number 6 is accelerant. ठीक है। Factor number 7 क्या है? Factor number 7 is known as a pro-convertin और stable factor, है ना, pro-convertin और stable factor। चलो फैक्टर नंबर 8 GPAT 2021 में क्वेश्चन आ चुका है फैक्टर नंबर 8 के ऊपर। तो व्हाट इज फैक्टर नंबर 8? फैक्टर नंबर 8 इज नोन एज एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन और आल्सो नोन एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। GPAT 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। फैक्टर नंबर 8 है ना, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। फैक्टर नंबर 9 क्या है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। देखो रिमेंबर फैक्टर नंबर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, GPAT 2021। फैक्टर नंबर 8। फैक्टर नंबर 9 क्या है? फैक्टर नंबर 9 इज नोन एज क्रिसमस फैक्टर, आल्सो नोन एज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट PTA, आल्सो नोन एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी।
इसके ऊपर भी कम से कम 3 या 4 बार क्वेश्चन आ चुका। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी एक डिसीज होता है ब्लड का, हीमोफिलिया। तो देयर इज नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन दैट। देयर इज वन डिसीज ऑफ ब्लड known as a hemophilia, which is genetic disease, which is inherited disease. There is a lack of one gene which code for plasma proteins, है ना। तो ये उसमें ये प्रोटीन्स बनेंगे नहीं तो क्लॉटिंग नहीं हुआ, एंड दैट्स हाउ उसको ब्लडिंग होते रहता है, known as a hemophilia, right? So anti hemophilic factor B, known as a factor number 9. फैक्टर नंबर 10 क्या है? फैक्टर नंबर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फैक्टर नंबर 10 क्या है? स्टुअर्ट पावर फैक्टर। जीपैट 2019 में स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फैक्टर नंबर 11 क्या है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, पीटीए, एंड इट इज आल्सो नोन एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। फैक्टर नंबर 12 क्या है? हेगमन फैक्टर। हेगमन फैक्टर कौन सा मन? हेगमन, है ना। कौन सा मन भाई? हेगमन फैक्टर। फैक्टर नंबर 12 हेगमन फैक्टर। फैक्टर नंबर 13 क्या है? फाइब्रिन स्टेबिलिटी फैक्टर। फैक्टर नंबर 13 फाइब्रिन स्टेबिलिटी फैक्टर। अभी ये दोनों के ऊपर कम से कम 2 बार क्वेश्चन पूछ रहा है, मिनिमम कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है इसके क्या? हेगमन फैक्टर एंड फाइब्रिन स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो मतलब देखो यहाँ पे, है ना, मैंने बोला है जैसे आपको टोल्ड यू, right? So blood clotting factors are very important. Blood clotting factors are very important. तो इसके ऊपर कम से कम 2-3 बार पूछा है, इसके ऊपर कम से कम 2-4 बार पूछा है, इसके ऊपर 1-2 बार पूछा है, इसके ऊपर 2 बार पूछा है, ये भी 1 आध बार पूछा है, ठीक है। उसके बाद में ये भी जीपैट 21 में पूछा है। इसके ऊपर तो कम से कम 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन, ये भी जीपैट में पूछा है, ठीक है। और ये दो जो है ना, उसमें भी जीपैट में 2-3 बार एग्जाम में पूछा है। तो मतलब एक ही टेबल्स में कम से कम 15 या 16 बार क्वेश्चन पूछा है एक ही टेबल में, ठीक है। तो और एक अभी लास्ट 2-3 साल से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं देखो, फ्रॉम लास्ट 2-3 years दे आर आस्किंग क्वेश्चन लाइक मैच द फॉलोइंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर विद देयर रिस्पेक्टिव नेम। तो देखो, match the following blood type of blood clotting factor with their respective name. In a one column they will give you factor number 1, 2, 3, 4, and in the another column they will give you the names of factor. You have to find out the correct match. वैसे मैच फाइंड आउट करने के लिए, इसे मैच फाइंड आउट करना आपके लिए अच्छा है, आपके लिए इजी होता है, राइट। नाउ इन अ जीपैट 2018 देयर वाज अनदर क्वेश्चन। जीपैट 18 में अलग क्वेश्चन आया था, है ना। नाउ व्हाट आर द विटामिन के डिपेंडेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर? जीपैट 2018 में क्या पूछा है? व्हाट आर द विटामिन के डिपेंडेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर? विटामिन के इज essential for the synthesis or activation of these blood clotting factors. Vitamin K is important for activation of factor number 2, factor number 7, factor number 9 and factor number 10. याद रखना है। तो विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द activation of these blood clotting factors. What are they? Factor number 2, factor number 7, factor number 9 and factor number 10. So these are known as a vitamin K dependent blood clotting factor. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है जीपैट 2018 में, ठीक है। नाउ अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स मालूम है, अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स मालूम है, अगर आपको ब्लड कोएगुलेशन मालूम है, अगर आपको विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स मालूम है ना, so you can understand the coagulant, you can understand the anticoagulant chapter, you can understand the hemolytic, you can understand the coagulant, anticoagulant, thrombolytics and hematinics. तो अगर आपको आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए कौन सा एंजाइम, कौन सा हार्मोन लगता है, इफ यू नो हाउ WBCs are produced, if you know how platelet are produced, so that is nothing but the, if you know these things you can understand the hematinic chapter, है ना। so that's why we used to take blood first, then coagulant, anticoagulant, thrombolytic and hematinics. तो एक ही टेबल है, टेबल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ना।
ये टेबल आपको और एक बार मैं रिवाइज करूंगा व्हेन विल सी द कोएगुलेंट एंटीकोएगुलेंट. दिस टेबल आई वुड लाइक टू रिवाइज यू अगेन व्हेन वी विल डिस्कस एंटीकोएगुलेंट चैप्टर. ओके, नाउ नेक्स्ट is nothing but the blood coagulation process. Next one is nothing but the blood coagulation process, and today I will try to finish this chapter. Okay, so blood coagulation process, also known as the blood clotting process, blood coagulation process or blood clotting process. तो blood clotting कैसे होता है? There are two pathways. First pathway is a extrinsic pathway, है ना, and second pathway is the intrinsic pathway. Extrinsic pathway, that means that occurs, है ना, outside the blood vessels. Extrinsic pathway that occurs outside the blood vessel. मतलब अगर आपको इंजरी हो गया नी में तो वहां पे आपका ब्लीडिंग हो जाएगा, है ना. आपका अगर नी, है ना, आपको अगर हाथ को इंजरी हो गया या फिर पैर को इंजरी हो गया, सपोज यू गॉट अ इंजरी ड्यू टू ए स्टोन और समथिंग, है ना, अगर आप गिर गए तो ब्लीडिंग होता है ना. तो कहाँ पे होता है? आपके जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, जैसे आपके पैर के ऊपर चोट लगी तो वहां पे ब्लीडिंग हो जाए. सो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल इज नोन एज एक्सट्रिंसिक पाथवे, है ना. कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल नोन एज अ extrinsic pathway, or है ना, and coagulation of blood inside the blood vessel, है ना, coagulation of blood inside the blood vessel, that is known as a clot formation or thrombus formation, है ना. तो coagulation of blood inside the blood vessel known as a intrinsic pathway, है ना. मतलब क्या है कि coagulation of blood inside the blood vessel that takes place by intrinsic pathway, coagulation of blood, है ना, in the tissues, in the cells or in the, है ना, coagulation of blood outside the blood vessel takes place by extrinsic pathway, है ना. तो ये pathway क्या होता है? We'll see it. First we'll see, है ना, first we'll see intrinsic pathway, मतलब clotting of blood inside the blood vessel, clotting of blood inside the blood vessel. Suppose your blood vessel is damaged, आपका blood vessel क्या हो गया? डैमेज हो गया. तो what will happen? So if blood vessel is ruptured, what will happen? So outer fibrous layer of blood vessel will be exposed. Now that fibrous layer or damaged blood vessel, जैसे blood vessel damage होता है, damaged blood vessel, है ना, damaged blood vessel will release, है ना, damaged blood vessel will release some chemicals known as a kallikrein and high molecular weight kinogen. So damaged blood vessel will release these chemicals kallikrein and high molecular weight kinogen. Now यहाँ पे देखो मैंने बोला था 16 blood clotting factors are there. I have told you 16 blood clotting factors, right? तो आप बोलेंगे सर 13 का तो आपने बोला है ना, 16 आपने बोला था तो 13 ही बोले आपने, बाकी के कहाँ पे, है ना. बाकी देखो फैक्टर नंबर 14, फैक्टर नंबर 14 इज अ प्री कैलिकायरिन, फैक्टर नंबर 14 इज अ प्री कैलिकायरिन, फैक्टर नंबर 15 इज अ कैलिकायरिन, एंड फैक्टर नंबर 16 इज अ हाई मोलिकुलर वेट काइनोजन, है ना. तो 13 आपके हो चुके हैं, 14 क्या है? प्री कैलिकायरिन, 15 क्या है? कैलिकायरिन, एंड 16 क्या है? हाई मोलिकुलर वेट काइनोजन. तो दीज आर आल्सो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. यहाँ पे आपके 16 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आपको समझ में आए होंगे. तो दैट विल बी, है ना, एक व्हेन वी विल डिस्कस द कोएगुलेंट एट द टाइम आई हैव लिस्टेड द 16. okay? Now intrinsic pathway means coagulation of blood inside the blood vessel. What happens if there is damage to your blood vessel? So damaged blood vessel, there is exposure of collagen, है ना, and exposure of collagen and release of some factors known as kallikrein and high molecular weight kinogen. Okay. Now what happens inside the blood? So blood clotting factor number 12, blood clotting factor number 12 क्या होता है? Blood clotting factor number 12 क्या होता है? It is known as a Higman factor, है ना. Blood clotting factor number 12, Higman factor, that will be activated, so 12A मतलब क्या है? Activated factor 12, so 12A. So there is a damage to your blood vessel, so there is the exposure of collagen and release of these chemicals kallikrein and high molecular weight kinogen, so that will activate the inactive factor number 12 into active factor number 12. Okay, again high molecular weight kinogen, active factor number 12
along with the high molecular weight kinase will activate the blood clotting factor number 9. 9 को क्या बोलते हैं अपन? क्रिसमस फैक्टर ना, क्रिसमस फैक्टर. So Christmas factor will be activated into 9A. 9A. Now 9A along with the calcium, which is known as the factor number 4. Calcium क्या है? Factor number 4. So that will activate the factor number, है ना? Sorry, ये क्या है? Factor number 11 है. So factor number 12 will be activated to factor number 12A with the high molecular weight kinase. Factor number 12A will activate the factor number 11 into 11A. 11 क्या होता है? एंटी इम्बोलिक फैक्टर. फैक्टर क्या होता है? एंटी इम्बोलिक फैक्टर, है ना, है ना. ये 11 क्या होता है? एंटी इम्बोलिक फैक्टर सी होता है, एंटी इम्बोलिक फैक्टर सी. देन फैक्टर नंबर 11 which is activated into factor number 11A, that along with the calcium will activate the factor number 9. factor number 9 into 9A. factor number 9 क्या होता है? क्रिसमस फैक्टर. Again factor number 8 and calcium along with the active factor number 9 will activate the factor number 10. factor number 10 क्या होता है? factor number 10 is nothing but the, है ना, Stewart power factor. Stewart power factor that will be activated into factor number 10A. factor number 10A जब activate होता है, factor number 10A is known as it is known as the prothrombin activator. क्या है बोलते हैं? prothrombin activator. factor number 10A along with the factor 5 activate the prothrombin. तो prothrombin का activate हो गया तो क्या होगा? So prothrombin will be activated. So prothrombin is converted into thrombin, and thrombin क्या करता है? Thrombin will activate the fibrinogen. ठीक है. तो prothrombin क्या है? फैक्टर नंबर 2 है. फैक्टर नंबर 2. Prothrombin will be activated into thrombin. Thrombin will activate the fibrinogen A into fibrinogen A. अभी ये फाइब्रिनोजन क्या है? फैक्टर नंबर 1 है. फैक्टर नंबर 1. फाइब्रिनोजन इज इनसोल्युबल. ये क्या है? इनसोल्युबल. सॉरी, इट इज अ सोल्युबल. फैक्टर नंबर, है ना, फैक्टर नंबर ए, फाइब्रिनोजन इज सोल्युबल इन द ब्लड. ये ब्लड में सोल्युबल होता है. इट इज सोल्युबल इन द प्लाज्मा. बट फाइब्रिनोजन ए सोल्युबल जो है, दैट इज कन्वर्टेड टू इनसोल्युबल फाइब्रिनोजन ए. क्या? इनसोल्युबल फाइब्रिनोजन ए. And fibrinogen insoluble will be polymerized, and there is a formation of loose threads or strand of fibrin. And after that calcium and factor number 13, that is known as the fibrin stability factor. 13 को क्या बोलते हैं? fibrin stability factor. तो fibrin stability factor along with the calcium will form a fibrin और tight clot, है ना. यहाँ पे clot बन जाएगा आपका. ठीक है. मतलब intrinsic factor ये है, right? Now intrinsic factor, right? तो एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है ना, है ना. यहाँ पे जो इंट्रिंसिक फैक्टर में, इंट्रिंसिक पाथवे में जो आपका कोलेजन एक्सपोज हो चुका है, दैट आल्सो एक्टिवेट द प्लेटलेट. ये प्लेटलेट को भी एक्टिवेट करता है. प्लेटलेट का एक्टिवेट होने के बाद में डैमेज होता है, फॉस्फोलिपिड रिलीज होता है. एंड ये फॉस्फोलिपिड जो है वो भी क्या है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है. मतलब इंट्रिंसिक पाथवे कैसे एक्टिवेट होता है? इंट्रिंसिक पाथवे मतलब क्या है ना? आई होप यू आर गेटिंग. इंट्रिंसिक पाथवे मीन्स व्हाट? सो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल. कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल, है ना. दैट इज नोन एज अ क्लॉट और दैट इज नोन एज थ्रोम्बस. So coagulation of blood inside the blood vessel that takes place by intrinsic pathway. When there is damage to your blood vessel, there is exposure of collagen and there is release of kallikrein and high molecular weight kinase. ये दो chemical release होंगे. Now what this chemical do? So actually blood clotting is a cascade of activation of different blood clotting factors. Blood clotting क्या है? It is a process, complicated process of activation of a series of ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. तो कैसा देखो, सो है ना, डैमेज्ड ब्लड वेसल्स will release the kallikrein, high molecular weight kinase, so that will activate the blood clotting factor number 12. so blood clotting factor number 12 क्या है? It is known as a Hegman factor. ये क्या है? Hegman factor. This is activated into factor number 12A. A मतलब क्या? Activated factor. so 12A मतलब activated factor 12 along with the high molecular weight kinase. ये भी क्या है? प्रोटीन है. so that will activate the factor number 11. factor number 11 क्या है?
It is nothing but the anti-hemophilic factor B, anti-hemophilic factor C, sorry, anti-hemophilic factor C. It is an anti-hemophilic factor C that will be activated into factor number 11A. Along with the calcium, 11A will activate the factor number 9. Factor number 9 क्या है? Christmas factor. Number 9 क्या है? Christmas. So active factor 9A. So active factor 9A along with the factor number 8 and calcium will activate the factor number 10. Factor number 10 क्या है? Factor number 10 क्या है? Factor number 10 is a nothing but the Stewart power factor. Stewart power factor. That will activate into 10A. Activated factor 10A. Now activated factor 10A or active factor 10A along with the factor V and factor V मतलब क्या है? Factor 5 है ना. Factor number factor 5 will activate the prothrombin. They are known as a prothrombin activator. तो prothrombin क्या है भाई? ना prothrombin is factor number 2. Factor number 2 क्या है? Prothrombin. तो prothrombin will be converted into thrombin after activation. Thrombin क्या है? It will convert fibrinogen. Fibrinogen क्या है? It is factor number 1 which is a soluble in the blood. Soluble fibrinogen A को insoluble fibrinogen A में कन्वर्ट करता है कौन? थ्रोम्बिन. नाउ insoluble fibrinogen A मतलब लूज insoluble थ्रेड तैयार होता है, थ्रेड बनता है. There is a polymerization of fibrinogen A and there is a formation of loose strands of fibrin. Now fibrin stability factor, that is factor number 13 and calcium, ये दोनों आते हैं और ये लूज थ्रेड जो बनाए उसको टाइट थ्रेड बनते हैं. That is the formation of tight blood clot. That's how intrinsic pathway is there. बनता कैसा है? intrinsic pathway. अभी देखो है ना जो एक्सपोज्ड कोलेजन होता है वो प्लेटलेट को भी एक्टिवेट करता है. प्लेटलेट मतलब क्या? थ्रोम्बोसाइट्स है ना. and that releases phospholipids which also activate the prothrombin. Okay? अभी intrinsic pathway and extrinsic pathway they are है ना for okay. So extrinsic pathway देखो when there is a trauma to tissue, जिससे आपका टिश्यू ब्रेकडाउन हो गया, आपका घुटने में लग गया आपके, तो क्या होता है? तो there is a extrinsic pathway activated and whenever there is a damage to your tissue, that is tissue trauma, that leads to release of thromboplastin. Thromboplastin क्या है? फैक्टर नंबर 3. थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? फैक्टर नंबर 3 नोन एज अ टिश्यू फैक्टर. रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, आपके टिश्यू को डैमेज हो गया है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है. और थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना अलग विद द ग्लाइकोप्रोटीन. थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है, प्रोटीन है. अलग विद द फैक्टर नंबर 3 फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. तो एंड फैक्टर नंबर 7 दे विल एक्टिवेट द डायरेक्टली फैक्टर नंबर 10. फैक्टर नंबर 10 क्या है? स्टूवर्ड पावर फैक्टर. फैक्टर नंबर 10 क्या है ना? फैक्टर नंबर 10 है आपका स्टूवर्ड पावर फैक्टर. तो फैक्टर नंबर 10 विल बी एक्टिवेटेड इनटू फैक्टर नंबर 10A. नाउ 10A है ना. नाउ एक्टिव फैक्टर 10 along with the calcium and factor number 5 that will activate directly thrombin. थ्रोम्बिन का एक्टिवेशन हो गया था. प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन विल कन्वर्ट इनएक्टिव fibrinogen A or insoluble fibrinogen A into insoluble fibrinogen A and then polymerization and then formation of tight clot. Means क्या है कि from these two stage second and stage 3 है ना. Stage second and stage 3 is a common pathway for both intrinsic as well as extrinsic blood clotting process. I hope I am audible to you and you are getting my points. I hope आपको समझ रहा है. I hope you are getting my points. समझ रहा है आपको है ना. इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉर ब्लड कोएगुलेशन. तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है? ब्लड कोएगुलेशन कैसे होता है? इंट्रिंसिक पाथवे मतलब क्या है? इंट्रिंसिक पाथवे मीन्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल. एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू टिश्यू डैमेज. तो आउटसाइड द ब्लड वेसल. तो आउटसाइड द ब्लड वेसल एंड इनसाइड द ब्लड वेसल, याद रखना है. आउटसाइड द ब्लड वेसल, इनसाइड द ब्लड वेसल. राइट. नाउ अप टू दिस मतलब कहाँ तक? एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10. एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10 यहाँ तक दोनों पाथवे क्या है? डिफरेंट है. तो दीज टू पाथवे आर डिफरेंट अप टू दिस स्टेप. बट एट अ स्टेज सेकंड मतलब दे विल एक्टिवेट द प्रोथ्रोम्बिन.
है ना, दोनों भी एक टाइम पे क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर नंबर 12 का एक्टिवेशन होता है, उसके बाद में फैक्टर नंबर 11 का एक्टिवेशन होता है, उसके उसके बाद में फैक्टर नंबर 9 का एक्टिवेशन होता है, उसके बाद में फैक्टर नंबर 10 का एक्टिवेशन होता है इनसाइड द ब्लड वेसल। बट यहाँ पे आउटसाइड द ब्लड वेसल क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली, है ना, जो टिश्यू थ्रोम्बोब्लास्टिन है वो डायरेक्टली किसको एक्टिवेट करता है, डायरेक्टली फैक्टर नंबर 10 को। जब फैक्टर नंबर 10 डायरेक्टली एक्टिवेट हो गया, फिर बाद में प्रोथ्रोम्बिन, मतलब स्टेज 2 एंड स्टेज 3 दे आर द फाइनल कॉमन पाथवे फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो इंट्रिंसिक पाथवे इनसाइड द ब्लड वेसल क्लॉटिंग, एक्सट्रिंसिक पाथवे आउटसाइड द ब्लड वेसल क्लॉटिंग। आई होप यू गॉट इट, है ना, ज्यादा नहीं बोल सकता अभी इसकी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट, है। तो इसके ऊपर भी कम से कम 4 या 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, इन द प्लाज्मा यू हैव प्लाज्मा प्रोटीन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, राइट। So what are the plasma proteins? So name of protein, molecular weight and their functions, very important। ये चार्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Now first one is nothing but the albumin। देखो अल्बुमिन नाम का जो वर्ड है वो जीपैट वाले को बहुत ही पसंद आता है, तो एक्चुअली जीपैट एग्जामिनर लव्स दिस वर्ड अल्बुमिन। व्हाई? बिकॉज दे हैव आस्क्ड एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन ऑन अल्बुमिन, कम से कम 10-15 क्वेश्चन अल्बुमिन के ऊपर पूछा है अभी तक। That's why I used to say the GPAT examiner loves this albumin, okay, है ना। देखो अल्बुमिन क्या है, इट इज अ प्लाज्मा प्रोटीन। तो पहला क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपको यहाँ से, है ना। क्वेश्चन आया था मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, क्या क्वेश्चन आया भाई, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। मोस्ट अबंडेंट मतलब क्या है, 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 सबसे ज्यादा कॉमन प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है ब्लड में, अल्बुमिन। सो मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज अल्बुमिन, राइट। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कवर हो गया, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्बुमिन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्बुमिन जीपैट 2020 में पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्बुमिन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्बुमिन। अल्बुमिन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 64,000 to 69,000 डेल्टा, ना। यहाँ पे 64 लिखो आप, या फिर 65 भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक्चुअली द रेंज इज फ्रॉम 64 to 69,000 डेल्टा। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जीपैट 2020 लाइक व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ह्यूमन अल्बुमिन। क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ह्यूमन अल्बुमिन, एंड आंसर वाज गिवन वाज 65,000 डेल्टा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अभी तक कवर हो चुके हैं आपके, है ना। देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अल्बुमिन। देखो पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन है तो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फर्स्ट फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड एंडोजिनस केमिकल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंडोजिनस केमिकल्स। तो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड केमिकल्स, है ना। अपने बॉडी के अंदर की जो जितने भी केमिकल्स है वो बाइंड करते हैं अल्बुमिन को, राइट। तो इट इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर द हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड एंडोजिनस केमिकल्स। सेकंड फंक्शन, व्हाट इज द role of this albumin, again remember very important role, it will regulate the pH, it will regulate the pH। एक क्वेश्चन आ चुका है आपका, है ना, लार्जेस्ट बफर इन द बॉडी, लार्जेस्ट बफर, लार्जेस्ट क्या है, बफर, लार्जेस्ट बफर इन द बॉडी इज अल्बुमिन, है ना। कितने क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक ही अल्बुमिन है, उसके ऊपर कम से कम 10-15 क्वेश्चन आ चुके हैं। इट इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड endogenous chemicals, it regulate the pH of blood, it regulate the pH of blood, it is the largest buffer in the body, largest buffer in the body, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है। देन
it regulate the osmotic pressure of your blood, it regulate the oncotic pressure of your blood, है ना. Again एक important role है, regulate the oncotic pressure of your blood. Again it is a storage protein, it is a storage protein, है ना. बॉडी में अल्बुमिन क्या है, इट एक्ट एज अ स्टोरेज प्रोटीन. अभी इसके बाद में है ना क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट ऑफ द ड्रग बाइंड्स टू विच प्लाज्मा प्रोटीन, तो अल्बुमिन, है ना. 99% ड्रग बाइंड्स टू विच प्लाज्मा प्रोटीन, दैट इज अल्बुमिन. ये क्वेश्चन भी आ चुका है. देन अल्बुमिन हैज अ डिफरेंट साइट्स ऑन अ अल्बुमिन हैज अ डिफरेंट साइट नोन एज अ ड्रग बाइंडिंग साइट्स. तो अल्बुमिन के ऊपर साइट 1 है, साइट 2 है, साइट 3 है, साइट 4 है. तो वी ऑलरेडी सीन इन द distribution chapter. We already seen the distribution chapter. Site 1 is known as our warfarin binding site, also known as a, you know, also known as a phenylbutazone binding site. Site 2 is known as diazepam binding site, also known as a azapropazone binding site. Site 3 is nothing but digoxin binding site. Site 4 is nothing but a tamoxifen binding site. We have already seen in the distribution chapter sites present on the albumin. ये भी देखा था अपन. Now second protein is nothing but the globulin. सेकंड प्रोटीन कौन सा है, ग्लोबुलिन. सेकंड प्रोटीन इज ग्लोबुलिन. मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 90,000 से लेके 1.5 लाख डेल्टन. तो ग्लोबुलिन इज सेकंड प्रोटीन, मॉलिक्यूलर वेट 90,000 टू 1.5 लाख. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन. तो देखो अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन दे आर नोन एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. Alpha and beta globulin, their role is nothing but the transportation of, again same, hormones, enzymes and chemicals. So alpha and beta globulins, they are the transport protein. And then third आता है gamma globulins. Gamma globulins को अपन बोलते हैं immunoglobulins. Gamma globulins को क्या बोलते हैं अपन, immunoglobulins. Gamma globulins मतलब क्या होता है, antibodies. So gamma globulins, they are having defense function. They are known as antibodies. So albumin and globulin. Okay, now next one is nothing but the fibrinogen. ना पहला था albumin हो चुका है ये पूरा, globulin हो चुका है पूरा. Fibrinogen is a molecular weight having 3.4 to 5 lakhs dalton. इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग, आपने देखा है. now next प्रोटीन क्या है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन. देखो याद रखना है, तो एसिडिक ड्रग बाइंड्स टू albumin, acidic drug binds to albumin, and for the acid 1 glycoprotein basic drug binds. Basic type of drug binds to acid 1 glycoprotein, acidic drug binds to albumin. We have already seen. Now acid alpha 1 acid glycoprotein molecular weight होता है उसका 44,000 dalton, and it is also known as orthomucoid. Okay, it is also known as orthomucoid protein. orthomucoid protein. Again increase in the acid glycoprotein. अगर बॉडी में एसिड ग्लाइकोप्रोटीन बढ़ गया तो क्या होगा, इट इज ए इंडिकेटर फॉर इन्फ्लेमेशन. तो इन केस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन देयर इज इंक्रीज्ड अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, याद रखना है. नाउ नेक्स्ट वन इज अल्फा ग्लोबुलिन. अल्फा 1 ग्लोबुलिन मॉलिक्यूलर वेट होता है 59,000 डेल्टन, है ना. अल्फा 2 ग्लोबुलिन, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 1.34 lakhs डेल्टन. And alpha 2 globulin is also known as ceruloplasmin. Alpha 2 globulin is also known as ceruloplasmin, है ना. क्यों, because it binds, it is a binding site for copper. It is a binding site for copper, that's why known as ceruloplasmin. Ceruloplasmin. Also binding site for iron. Peroxidase enzyme responsible for the incorporation of iron into transferrin. तो अल्फा 2 ग्लोबुलिन जो इट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. जो ट्रांसफेरिन जो होता है, ट्रांसफेरिन इट इज अ आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. ट्रांसफेरिन जो होता है आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, दैट इज ऑल्सो अल्फा 2 ग्लोबुलिन, है ना. तो देयर इज वन एंजाइम नोन एज पेरोक्सिडेज व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरन इनटू पेरोक्सिडेज ट्रांसफेरिन. थर्ड आता है आपका लिपोप्रोटीन. नेक्स्ट इज लिपोप्रोटीन. तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 20 से लेके, है ना, 2 lakhs to 3.4 lakhs डेल्टन. तो देखो लिपोप्रोटीन में क्या आता है, एचडीएल. इन द लिपोप्रोटीन एचडीएल, एचडीएल, एचडीएल इज देयर, एलडीएल इज देयर,
HDL means what? Low density, ना, HDL means high density lipoprotein, LDL means low density lipoprotein, and then आगे ना आता है तीसरा एक आता है VLDL, VLDL मतलब क्या? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसको अपन बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज गुड फॉर गुड कोलेस्ट्रॉल, है ना. इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक. हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब क्या है? उसको बोलते हैं अपन बैड कोलेस्ट्रॉल. वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, है ना, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने. सो टीवी पे डॉक्टर अक्षय कुमार जी आते हैं, है ना, डॉक्टर अक्षय कुमार, है ना, बॉलीवुड के नए डॉक्टर है डॉक्टर अक्षय कुमार सर. डॉक्टर अक्षय कुमार सर नए डॉक्टर बन चुके हैं अभी. आई डोंट नो कहाँ से उन्होंने MBBS किया है, MD किया है. आई थिंक उन्होंने रशिया से MBBS किया है, डॉक्टर अक्षय कुमार, है ना. तो वो आते हैं सफोला गोल्ड, है ना, आपको आते हैं ना सफोला गोल्ड ऑयल बेचने के लिए. सफोला गोल्ड इसमें नहीं है कोलेस्ट्रॉल, इसमें है हाई डेंसिटी, इसमें है HDL मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल. वो आपको बोलते हैं, उन्होंने कहाँ से बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है उनको ही मालूम है, बट बोलते हैं वो, जैसे सफोला गोल्ड ऑयल इसमें नहीं है कोलेस्ट्रॉल जो आपके चाहने वालों को हेल्दी बनाएगा. तो उनको बोलो सर हमारे चाहने वाले इतने हेल्दी है कि अगर स्कूटी पे बैठे तो स्कूटी का टायर फटता है. ठीक है. तो लिपोप्रोटीन्स they are also known as a plasma proteins, and their molecular weight is around 2 to 3.4 lakhs kilton. In that you have LDL, HDL, VLDL. What is the role of these lipoproteins? They are the transport proteins for lipids. They are the transport protein for lipids. Next होता है आपका हीमोग्लोबिन. So molecular weight होता है 64.5 thousand Dalton. And what is the role of hemoglobin? Transport of oxygen. So ये चार्ट important है. This chart is very very important. Lot of times they already asked question on this. This chart is important. Lot of time question has been asked. Now variation in the plasma protein level, है ना, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल कम ज़्यादा कब हो गई? वेरिएशन इन द प्लाज्मा प्रोटीन लेवल. जैसे टोटल प्रोटीन है आपको बॉडी का, टोटल प्रोटीन मतलब सभी प्रोटीन मिला के क्या है आपका टोटल प्रोटीन. Now total protein is increased. Total protein of body is increased in case of, है ना, टोटल प्रोटीन बॉडी का इंक्रीज हो गया, उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपरप्रोटीनेमिया. क्या बोलते हैं? हाइपरप्रोटीनेमिया. तो यहाँ पे दो वर्ड याद रखना. देयर आर 2 वर्ड्स, है ना, 2 वर्ड बोलता हूँ मैं आपको. 2 वर्ड क्या है? पहला वर्ड है मिया. यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत आ रहा है. There are 2 words very very important. There are 2 words. First word is Mia, Yama A. First word क्या है आपका? Mia. And second word is Ria. There are 2 words. First one is Mia. Second one is Ria. R-I. Mia and Ria, they are the 2 sisters. Mia and Ria, they are the 2 sisters. आप बोलेंगे सर ये क्या चल रहा है? So Mia means what? Mia is related with the blood. Mia is related with the blood. Mia means blood and Ria means क्या? Ria means urine. Mia means blood, Ria means urine. ये दोनों बहनें होते हैं मिया एंड रिया. तो मिया ब्लड में होती है, रिया यूरिन में होती है ना. तो जो भी ब्लड में बढ़ गया उसको बोलेंगे हाइपर. जो भी जिसका भी लेवल बॉडी में बढ़ गया उसको बोलेंगे हाइपर, है ना. और जिसका कम हो गया उसको बोलेंगे हाइपो. जो कम हो गया उसको हाइपो, जो बढ़ गया उसको हाइपर. अगर ब्लड में भी बढ़ गया तो हाइपो मिया, ब्लड में कम हो गया तो हाइपो मिया, ब्लड में बढ़ गया तो हाइपर मिया. ठीक है. अगर यूरिन में कुछ बढ़ गया तो उसको बोलने का हाइपर यूरिया, है ना, हाइपोरिया. बढ़ गया तो हाइपर रिया, कम हो गया तो हाइपोरिया, है ना. हाइपोरिया, हाइपोरिया मतलब बढ़ गया तो ना. इफ देयर इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एनी सब्सटेंस इन द ब्लड नोन एज हाइपरमिया, एंड इफ देयर इज डिक्रीज लेवल इन द ब्लड नोन एज हाइपोमिया.
If there is increased level in the urine known as hyperria, if there is decreased the hyporia. अब देखो, if there is increase in the protein level of blood known as hyperproteinemia. देखो hyperproteinemia मतलब ब्लड में प्रोटीन बढ़ गया है ना. यहाँ पे देखो हाइपरप्रोटीन्यूरिया. हाइपरप्रोटीन्यूरिया मतलब क्या, यूरिन में प्रोटीन आया है ना. हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया. देखो हाइपरग्लाइसीमिया मतलब क्या, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसे मतलब ग्लूकोज, मिया मतलब क्या ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया. अभी वही यहाँ पे देखो ग्लाइकोज यूरिया, हाइपर ग्लाइकोज यूरिया, हाइपर ग्लाइकोज यूरिया. हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज, रिया मतलब क्या यूरिन. यूरिन में ग्लूकोज बढ़ गया तो हाइपरग्लाइसीरिया और सिंपली ग्लाइकोज्यूरिया. मतलब रिया एंड मिया दे आर द सिस्टर्स, दे आर नोन एज कजन सिस्टर्स. बहुत ही डेंजर है दोनों ना. तो मिया रिया ये कंसेप्ट आपको किसी ने बोला नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट. मैं उसी के लिए हूँ, आपको आपका जीपैट नाइपर डीआई फार्मासिस्ट सबका डाउट क्लियर करेगा है ना. तो वहाँ पे एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है, कौन सा, माँ का, भाई का, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल है ना. तो वैसा ही अपना भी एक डायलॉग बना के रखा है अपने, मतलब जीपैट का, नाइपर का, ड्रग इंस्पेक्टर का, फार्मासिस्ट का, सबका डाउट क्लियर करेगा ये मास्टर. ठीक है, तो टेंशन मत लो. ठीक है, टोटल प्रोटीन ऑफ ए बॉडी. ओके, टोटल प्रोटीन ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड नोन एज हाइपर प्रोटीनीमिया, नोन एज हाइपर प्रोटीनीमिया. ओके, सो हाइपर प्रोटीनीमिया टोटल बॉडी प्रोटीन कब बढ़ता है, जब डिहाइड्रेशन होता है. सो इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन hemolysis, in case of acute infection like acute hepatitis, nephritis, respiratory distress syndrome, then excess of use of glucocorticoids, leukemia, rheumatoid arthritis and alcoholism. So in this case there is an increased level of protein in the body. ठीक है, known as hyperproteinemia. Now hypoproteinemia, hypo मतलब क्या कम, प्रोटीन मतलब क्या प्रोटीन, मिया मतलब क्या मिया मतलब क्या ब्लड. ब्लड में प्रोटीन कम कब होगा, when there is a diarrhea, when there is a hemorrhage, when there is a burn, pregnancy, malnutrition, starvation, liver cirrhosis, infection like chronic hepatitis and nephritis. So in this case protein level of body will decrease. तो ब्लड में प्रोटीन बढ़ गया, हाइपरप्रोटीनेमिया, ब्लड में प्रोटीन कम हो गया, हाइपरप्रोटीनेमिया. कब बढ़ता है, ये डिसीज में बढ़ता है. कौन से, डिहाइड्रेशन हो गया, हीमोलाइसिस हो गया, हेपेटाइटिस, एक्यूट नेफ्राइटिस हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, ल्यूकेमिया, rheumatoid arthritis, alcoholism. In this case protein level is increased known as hyperproteinemia. At hypoproteinemia मतलब कम होगा, कब होगा, डायरिया, हिमोरेज, बर्न्स. बर्न्स में मतलब क्या, आपके पूरे शरीर जल गया तो क्या प्रोटीन खत्म ही होगा ना, तो हाइपोप्रोटीनेमिया. राइट, मालन्यूट्रिशन, प्रेगनेंसी, प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन, बहुत दिनों तक आप भूखा रहते हो तो प्रोटीन कम हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट प्रोटीन इज अल्बुमिन. तो अल्बुमिन का लेवल कब बढ़ता है, so albumin is increased in case of, so albuminemia है ना, hyper albuminemia, albuminemia. So increase in the albumin level is there in case of dehydration, excessive glucocorticoids and congestive cardiac failure. तो अगर ये डिसीज हो गया, डिहाइड्रेशन हो गए, एक्सेसिव यूज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स मतलब आपने स्टेरॉइडल ड्रग का ज़्यादा यूज़ किया, बीटामिथाजोन, प्रेडनिसोलोन, ट्राइमसोलोन वगैरह, देन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या होता है, अल्बुमिन बढ़ता है. राइट, सो इन केस ऑफ माल न्यूट्रिशन, लिवर सिरोसिस, बर्न्स, हाइपोथायरॉयडिज्म, नेफ्रोसिस एंड लो वाटर इंटेक, तो अल्बुमिन लेवल ऑफ योर बॉडी विल बी डिक्रीज्ड. ग्लोबुलिन कब बढ़ता है, ग्लोबुलिन विल बी इंक्रीज्ड इन केस ऑफ लिवर सिरोसिस, क्रोनिक इन्फेक्शंस, देन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. कब कम होगा, तो ग्लोबुलिन्स विल बी डिक्रीज्ड इन केस ऑफ एनीमिया, एक्यूट हेमोलाइटिक एनीमिया है ना, देन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एम्फीसिमा. फाइब्रिनोजन कब बढ़ेगा, फाइब्रिनोजन लेवल ऑफ बॉडी इज इंक्रीज इन केस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक, स्टोमा. अभी इसका टर्म्स का मतलब अगर आपको मालूम है तो फिर आप जीपैट छोड़ दो है ना. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब क्या, इन्फेक्शन ऑफ योर किडनी है ना. मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक मतलब क्या, इफ देयर इज अ ब्लीडिंग इन केस ऑफ ब्लीडिंग इन द ब्रेन नोन एज स्ट्रोक, ट्रॉमा. ठीक है, तो इन केस में फाइब्रिनोजन लेवल विल बी इंक्रीज्ड.
Hypertension will be decreased in case of liver dysfunction, use of anabolic steroids, use of phenobarbital. अभी देखो एजी रेशो, कौन सा रेशो? एजी सुनते हो, एजी सुनते हो है ना? एजी कौन है? ठीक है, एजी मतलब क्या? एजी मतलब वो अपने वाला एजी नहीं, एजी मतलब वो वाइफ वाला एजी नहीं। एजी क्या है? ये एजी क्या है? ए फॉर अल्बुमिन, जी फॉर ग्लोबुलिन। एजी रेशो क्या है? एजी रेशो मतलब वो अपने घर वाला एजी नहीं, एजी ओजी लोजी सुमोजी मैं हूं मोजी, है ना? वो अलग बात है, वो अनिल कपूर का एजी है, वो एजी नहीं। ये एजी क्या है? ए फॉर अल्बुमिन, जी फॉर ग्लोबुलिन। एजी रेशो मीन्स व्हाट? सो अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो, ये टर्म आपको किसी ने बोला नहीं होगा, किसी भी कॉलेज में टीचर को पूछ लो, या फिर कोई क्लासेस वाला बहुत शांति कर रहे तो उसको पूछ लो, नहीं मालूम उसको। एजी रेशो इज अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो, है ना? यहां तक तो मालूम हो भी सकता है, बट उसके आगे व्हाट इज द नॉर्मल एजी रेशो, है ना? एजी रेशो मतलब क्या? एजी रेशो मतलब अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो। व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एजी रेशो? रिमेंबर, नॉर्मल वैल्यू ऑफ एजी रेशो 1:2, नॉर्मल एजी रेशो इज 1:2, नॉर्मल एजी रेशो अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो, अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो 1:2। ये लिख लो आप, नहीं लिखना है तो मत लिखो, मेरा क्या जाने वाला है। एजी रेशो इज नथिंग बट द अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो। so what is that? 1:2, normal albumin globulin ratio is 1:2. now that ratio is increased or decreased, ये रेशियो जो है ना इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है इन केस ऑफ डिफरेंट डिसीजेस, particularly in case of it is increased in case of hypothyroidism, excessive use of glucocorticoids, है ना, हाइपो, है ना, हाइपोगामा ग्लोबिनेमिया, गामा ग्लोबिन्स अगर कम हो गए तो अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो will be increased in case of hypothyroidism, use of glucocorticoids, hypogamma globinemia, intake of high carbohydrate diet and protein diet. Albumin globulin ratio will be decreased in case of liver dysfunction and necrosis. ना, I hope you have understood this. अगर आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया। ठीक है, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया क्या है भाई? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया। कितना एनीमिया है? कितना मिया होता है ना? पहला होता है सल्लूमिया, दूसरा होता है अर्बज़मिया, तीसरा होता है सोएलमिया, और चौथा एक मिया है जिसका नाम मैं नहीं ले सकता। कितना मिया होता है ना? सल्लूमिया, अर्बज़मिया, सोएलमिया, और एक मिया होता है जो नाम नहीं ले सकता। ठीक है, तो कितना टाइप का मिया होता है? फर्स्ट वन इज डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया। एनीमिया मीन्स व्हाट? डिक्रीज इन द हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ योर बॉडी। अगर हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है ह्यूमंस में? नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन द मेल्स, है ना, हीमोग्लोबिन इन द मेल कितना है? 12 to 16। 12 to 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 12 to 16 ग्राम। ठीक है, इन द हीमोग्लोबिन एचबी, हीमोग्लोबिन को बोलते हैं अपन एचबी। hemoglobin in the males 12 to 16, in the females in the females 11 to 13, in the females 11 to 13। now it is a normal hemoglobin of your body, normally hemoglobin कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। now if hemoglobin level is decreased, अगर hemoglobin level कम हो गया, if hemoglobin level is decreased, anemia, कौन सा मिया? anemia, है ना? if hemoglobin level is decreased known as anemia, and अगर hemoglobin level if it is increased, if hemoglobin level is increased known as a polycythemia, known as a polycythemia। ये क्वेश्चन जीपैट में आ चुका है, मैंने बोला था लास्ट टाइम। so hemoglobin level in the male 12 to 16, in the female 11 to 13,
इफ इट इज इंक्रीज्ड नोन एज अ पॉलीसाइथेमिया, इफ इट इज डिक्रीज्ड देन नोन एज एनीमिया। तो कितने टाइप की एनीमिया है भाई? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनीमिया आर देयर? एनीमिया, एनीमिया। सो फर्स्ट वन इज अ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। पहला कौन सा है भाई? मेगैलोब्लास्टिक। पहला कौन सा है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगा मतलब क्या? मेगा मतलब कोई मेगा मतलब लड़की नहीं है, मेगा या लड़की का नाम नहीं है। मेगा मतलब क्या? लार्ज। ब्लास्टिक मतलब क्या? सेल साइज। तो सेल साइज ये क्या है? मेगा मतलब लार्ज, ब्लास्टिक मतलब सेल साइज। तो मेगलोब्लास्टिक मतलब क्या है? सेल साइज बड़ा हो गया। सो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया मींस व्हाट? सो देयर इज इंक्रीज इन द size of RBC. There is increase in the size of RBC due to what? Due to vitamin B12 deficiency or folic acid deficiency. Now, you know, so mostly it is related with the folic acid deficiency. है ना, B12 का डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी हो गया तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। ब्लड का आरबीसी का साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। सो एबनॉर्मली लार्ज साइज्ड आरबीसी। नेक्स्ट आता है पर्नीशियस एनीमिया। कौन सा एनीमिया? पर्नीशियस एनीमिया। खतरनाक, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है ना, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। क्वेश्चन क्या आया था? विटामिन B12 और साइनोकोबालामाइन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन। विटामिन B12 और साइनोकोबालामाइन क्या है भाई? विटामिन B12 और साइनोकोबालामाइन डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन कौन सा एनीमिया? पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन द पर्नीशियस एनीमिया। थर्ड होता है ए प्लास्टिक एनीमिया। आपने ये सुना होगा, किसमें? एंटी कैंसर ड्रग अपना हो चुका है ना, ए प्लास्टिक एनीमिया। एंटी कैंसर ड्रग में बहुत आया है ना। व्हाई? बिकॉज ऑल एंटी कैंसर ड्रग दे सप्रेसेस द बोन मैरो एंड दैट कैन रिजल्ट द ए प्लास्टिक एनीमिया। So what is aplastic anemia? Result of because of the bone marrow suppression or failure. Most of the anti-cancer drug suppresses the bone marrow. जैसे है ना, बाद में कुछ एंटीबायोटिक लाइक क्लोरामफेनिकोल, फेनिटोइन वगैरह है ना, बहुत सारे ड्रग्स हैं। So aplastic anemia because of the suppression of bone marrow that result in the suppression of RBC production as well as WBC production, platelet production that result in the thrombocytopenia. Thrombocytopenia मतलब क्या? Decrease in the platelet in the blood. Okay, low platelet count. Okay, cytotoxic drug like anti-cancer drugs they causes the this bone marrow suppression. Cytotoxic drug, then some anti-inflammatory drugs, then some anti-convulsant or anti-epileptic drug they causes the aplastic anemia. Okay? Now next होता है hemolytic anemia. कौन सा भाई? Hemolytic. Hemo मतलब क्या? Hemo मतलब अगर कोई लड़का लड़की नहीं है, Hemo मतलब ब्लड, लाइटिक मतलब क्या? ब्रेकडाउन। तो क्या है फिर? हेमोलाइटिक एनीमिया मतलब ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। तो हेमोलाइटिक एनीमिया इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी परमानेंटली बिकॉज ऑफ द ओवरएक्टिव एक्टिविटी ऑफ योर स्प्लीन और एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन क्या करता है? ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। तो अगर ओवर एक्टिव हो गया या फिर एबनॉर्मल फंक्शनिंग कर दिया तो सारे ब्लड का ब्रेकडाउन कर देगा, सत्यानाश। That is known as the hemolytic anemia. So breakdown of RBC or destruction of RBC because of the overactiveness or abnormal spleen function known as a hemolytic anemia. ठीक है। नेक्स्ट आता है कंजेनाइटल hemolytic anemia. कौन सा नाइटल? कंजेनाइटल। कौन सा नाइटल? कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब क्या है? जेनाइटल मतलब जेनेटिक से। क्या है? जेनेटिक से। नाम में सोचो यार, आप नाम में ढूंढते जाओ, नाम में ही बहुत कुछ रखा होता है। आप बोलते हो नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। तो कंजेनाइटल मतलब क्या? जेनेटिक। यहाँ पे देखो, ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। तो देयर इज अ एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या भाई? एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इंक्रीज द आरबीसीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, है ना। देयर इज इंक्रीज इन द आरबीसी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एंड लाइफ चैनल्स। दैट इज नोन एज हीमोलाइटिक एनीमिया। कौन सा लाइटिक? हेमोलाइटिक। कौन सा? कंजेनाइटल। कौन सा जाता है? कंजेनाइटल। तो मैकुलोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, कंजेनाइटल, हेमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट आता है आपका सिकल सेल एनीमिया। कौन सा सेल? सिकल सेल। सिकल मतलब क्या? सिकल मतलब सिकलिंग ऑफ आरबीसी। सिकलिंग मतलब क्या? चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी। सिकल सेल देखो, नॉर्मली आरबीसी कैसा होता है? इट इज अ कनकेव शेप्ड, बाय कनकेव। ठीक है, बाय कनकेव। दिस इज नॉर्मल आरबीसी। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल आरबीसी है। बट व्हाट इज दिस?
ये क्या है? दिस इज नोन एज सिकलिंग ऑफ आरबीसी, सिकलिंग ऑफ आरबीसी। तो सिकल सेल अनीमिया और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। इसमें क्या है कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा एंड व्हेन इट इज ऑक्सीजनेटेड, व्हेन देयर इज अ बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन, so there is a change in the hemoglobin shape and RBC will have a sickle shaped, sickle shape, that's why sickle shape, sickle cell anemia। नेक्स्ट होता है दूसरा मिया है थैलेसीमिया। ये मिया इतने हैं ना, खत्म ही नहीं होते। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या है? इट इज अगेन जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज अ इनहेरिटेड कॉमन इन मेडिटेरियन कंट्रीज। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन इंटेंस रिड्यूसेस द आरबीसी प्रोडक्शन एंड स्टिमुलेट द हेमोलाइसिस। थैलेसीमिया मतलब क्या? कि उसका आरबीसी प्रोडक्शन कम होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है थैलेसीमिया। पॉलीसाइथीमिया, देखो पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया मतलब क्या? एबनॉर्मल इंक्रीज इन द आरबीसी इन द ब्लड। आरबीसी बढ़ गया ब्लड में तो पॉलीसाइथीमिया होगा। बाकी भी ब्लड के डिसऑर्डर्स है, जैसे आपका ल्यूकोपेनिया है ना, डिक्रीज इन द ल्यूकोसाइट, डिक्रीज इन द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकोपेनिया। न्यूट्रोपेनिया और ग्रेनुलोसाइटोपेनिया मतलब डिक्रीज इन द न्यूट्रोफिल्स, है ना। ल्यूकेमिया मतलब इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर, ब्लड कैंसर। तो कैंसर में बहुत सारे टाइप है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, है ना, क्रोनिक ल्यूकेमिया, CML, chronic myeloid leukemia, acute myeloid leukemia, AML. We have seen the cancer also. कैंसर में देखा है acute myeloid leukemia, acute myeloid leukemia, chronic myeloid leukemia, aplastic anemia, है ना। ये सब क्या है? क्या ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। नाउ ब्लड इज नथिंग बट द, ब्लड क्या है आपका? आइसोटोनिक, है ना। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड? तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज इक्विवेलेंट टू 0.9%, 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। अगर 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है तो दैट हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द ब्लड। So you can say 0.9% sodium chloride is isoosmotic with the blood plasma, and if you inject a 0.9% sodium chloride in the blood, so there is no destruction of this, there is no problem. Okay, so 0.9% sodium chloride is isotonic with the blood plasma, known as a saline solution. Okay? Now, so if you inject a hypotonic, if you inject a hypertonic, okay, if you inject a isotonic solution, 0.9% sodium chloride is known as isotonic with the blood plasma, isotonic, ठीक है। So if you inject a isotonic solution, there is no damage to RBC, there is no change in the shape of RBC. Isotonic solution, normal RBC. Hypotonic मतलब क्या है? तो less osmotic pressure than blood. So if you inject a hypotonic solution, है ना, what will happen? What will happen? As hypotonic solution inject किया, blood cells will be, blood cells RBC will absorb the water and will shrink. So will absorb the water and will increase the size. So there is a swelling of cells known as endoosmosis. And if you inject a hypertonic solution to the blood, so what happens? There is a crenation of cell or exosmosis, and blood cell be bursted. यहाँ पे इतना खींच लेगा पानी, बाद में फूल के टूट जाएगा। ये जो ना कर लेंगे अपन, मुझे लगता है कि ज़्यादा खींचने से मज़ा नहीं है कुछ। कल और एक बार लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने 2 ही लेक्चर लिया था ब्लड का, इस बार मैं 3 लेक्चर लूँगा, ठीक है। लेक्चर लेने में कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। कल मैं फिर से आपको थोड़ा पार्ट रिवाइज करूँगा, ठीक है। I hope everybody has understood. I hope everybody has understood. I hope everybody has understood. I hope everybody has understood.